हाय, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम एवरीवन जो भी हमारे साथ अभी हैं. वी आर बैक विथ अनदर सेशन ऑन स्कोर एग्जामिनेशन. नाउ वी ऑल नो कि श्री चैतन्य ले आया है हमारे लिए इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि है स्कोर का टेस्ट. इसमें क्या होता है बेसिकली, ये इंडिया में जो भी तुम जैसे स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड 3 टू स्टैंडर्ड 11 12, उनके लिए एक स्कॉलरशिप एग्जाम है. इसके साथ साथ तुम्हें, अगर तुम इसमें अच्छा करते हो, इफ यू शो अस दैट यू आर अ जीनियस by scoring a certain amount of marks in this examination, a certain amount of cutoff, then you can win exciting gadgets, and usse bhi zyada you can win NASA trips. So you can go to NASA and click amazing pictures, post on your Instagram and stuff. तो ये तो तुम कर ही सकते हो. ऊपर से you can get up to 100% of scholarship in an educational institute like Sri Chaitanya. Okay. तो इसमें तुम्हारा जो भी है, तुम्हारा एम या गोल, मे इट बी जेई और नीट, वॉट एवर योर हायर स्टडीज और प्लान्स दैट यू हैव, यू कैन गेट अप टू 100% ऑफ स्कॉलरशिप एंड guidance of Sri Chaitanya and educators at Sri Chaitanya who are teaching students like you for over 40 plus years and paving your ways to the dream colleges of yours, right? तो ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट का मोड्स हैं. ये पैन इंडिया होता है, मतलब all India students from the entire nation will show up to this exam and they'll give the test, and then if you show us that you are a genius, you are eligible to get this opportunity, we are here, we are waiting for you to take you to NASA, to give you 100% scholarship for your higher education and a lot more exciting gadgets and stuff, right? तो इसमें तुमको मिलता है 100% scholarship, वो तो है ही. ऊपर से you will also get the chance to compete with India's brightest minds. What does that mean? It means that in India we have so many bright students across the nation, so you will get a chance to see where you actually stand in this entire educational system, right? Hi Suresh, yes, hi. So yeah, so we are here, we will discuss about very important 25 questions of yours for this score exam. I hope you already know. These are the dates. Basically you can give both the tests, दोनों आप दे सकते हो. You can appear in both the examinations, and in whichever exam you will do good, like the better marks, that will be counted. Okay, and you can register yourself for this examination at the srichaitanyascore.com. You can just visit the link in the description on the pinned comment, and you can just go to the site and register for yourself, right? Moving forward, so today we have 25 questions for life processes, because we all know, one second, yeah. So what we have today is 25 questions on living life processes and diversity in living organisms. So this is the most major part of biology for your 10th standards. Now you're in your 10th standards, so you will be having major jump in your educational field, because हमें पता है कि कॉलेज में जब हम जाते हैं, वो कोई भी कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया या मेडिकल कॉलेज हो गया या कोई आम नेचुरल जनरल साइंस वाला कोई भी कॉलेज में अगर आप जाते हो, तो उसमें एक लीप होता है, एक जंप होता है फ्रॉम योर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स. बट इन द एंटायर एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया दैट वी हैव, उसमें से द बिगेस्ट जंप और द बिगेस्ट लीप is the one that takes place from standard 10th to 11th. That is the massive jump, and that you are going to cross in the coming year, in this year itself. So life processes in that is a very important part or section where you will be covering entire anatomy and morphology and functionality of both plants and animals, right? तो plants and animals में दोनों में ये एक बहुत मेजर चंक प्ले करता है, एंड इसमें से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, लाइक 50% ऑफ योर स्कोर एग्जामिनेशन और एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस यू मे कंसिडर, 50% ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस. ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस का फर्स्ट क्वेश्चन है इधर,
If anyone is here with me, you can just show up and comment down the correct answer for this. The basic unit of life in all living being. So this is a very simple question. The standard of the questions will go up till 25th question. We will see that okay, the difficulty levels are also being raised by one after another. So you can just show up by giving a like or giving the right option, and we will move ahead. So for now, if you see, this is the very basic question. You can see this question coming from like third standards, like not third, like 5th to 6th standards, and up till 10, this question will always be in your life till when you will be studying biology. Like the day जब तक आप biology पढ़ोगे तब तक ये question आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. So the basic unit of life in all living being is what? Is obviously the cell, right? Is obviously the cell. Sorry. The basic unit of life is obviously the cell. This is the very basics of biology, like the most easy question. Moving ahead, we have which process enables green plants to make their food. Again, this is a very basic questions. All these type of questions come in the examination just to test your merit or test your speed, because few questions are there that you just need to know the answer and just tick mark and move ahead with it, right? So ये कुछ वैसे क्वेश्चंस में से एक है जहां पे आपको बस क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया है ताकि आप मूव अहेड कर सकते हो इस क्वेश्चन को लेके, राइट? तो इधर जब आप देखेंगे तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस ही होगा, वी ऑल नो इट, बट ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तब आपको जल्दी जल्दी इसको टिक करके आगे बढ़ना है. So these are again a question, this is again a question where people make mistakes till now, even though it is the very easy question in biological field, like you are in 10th standard, still people make silly mistakes. Students like you make silly mistakes. So to compete and filter out the silly students and pick out the geniuses like you, these type of questions are given in the examination. Hi. Right. Moving forward, we have the site of gaseous exchange in human lungs. What is the site of gaseous exchange? Now we all know we have lungs and we have the, as I said in another session, which was a complete session of the most weightage, the biological syllabus chapter which has the most weightage. In that session I have already discussed the entire topics and portions of the chapters of the life processes and living world basically in your 10th standards, which come in the examination. So all the important portions are covered there. You can go and watch that video again, and it has all the portions and parts and topics and subtopics. Individually we have discussed all the theory. So see, in this type of questions now, you'll always have to keep a mind map of the flow, okay, the flow of the passage of wind. So all the pathways, may it be wind pathway like the breathing and respiration, may it be digestive pathway, the entire from the mouth to the anus, the entire alimentary canal. Then we have the excretory pathway where the water is converted into urine in the kidney, the entire pathway there. And also in reproduction we have the pathways of the sperms and the reproductory pathway you may call it. So all those pathways are very important. These were all for human anatomy, and in plants you will have the passage of the food, the pathway of the food, the transport of water, transpiration, and all these pathways are again very important. So read it like that and make pathways, flow charts of pathways. That will help you to attempt your exam. If you are here, you may like the video as well and share the video so that most of the students who are interested in this examination can see the video, okay? Like this video. Moving ahead. So obviously the site of gaseous exchange in human beings in lungs will be the one which is the most close to the capillaries or the bloods. So that is none other than the alveoli, right? The alveoli, because that is the alveoli are the sacs, air sacs, or the thin membranes in the lungs which has the most closest proximity to the blood capillaries. So the gaseous exchange takes place in the surface area or the surface of alveoli, right? Yes, correct answer. Moving ahead.
The pigment that traps the sunlight during the photosynthesis in plants. So again, this is a very basic questions. These are basic questions. These are basically put in the examination to take up your time, and you will read it, or you will make some silly mistakes. So these are for everyone. You will find few questions which are for everyone and few questions to filter out the genius minds, right? So these are those questions which are for everyone. You might attempt this and get marks easily, right? These are time consuming. So which pigment traps the sunlight during photosynthesis? Is it hemoglobin? Is it chlorophyll, xanthophyll, carotene? Anyone? Okay, the correct answer is chlorophyll, right? Because chlorophyll pigment in the chloroplast is green in color. We all know this pigment is green in color, and that's why the chlorophyll is green in color, the green pigment that is present in the chloroplast, and that traps the sunlight for photosynthesis. Moving ahead, we have in plants water transport from roots to the leaves, from roots till the leaves. This is done by which pipeline or which vessel or whatever, or the pipeline that carries the water in the plant? Anyone in the comments? Baby man is correct, giving the correct answer here. But do you know the answer for this one? Which one? Xylem. Yes. So xylem is responsible for the water transport in plants from roots to the leaves, right? So xylem is the one which carries the transport. Again, in this type of questions, I am saying that please keep the pathways like handy. Keep the pathways handy, and please write down all the flows in a flow chart. Yeah, water and minerals also. Yeah, right. So all these are very important. You need to make sure that everything you have in pathways and flow charts. That's how you will be mind mapping them, and you can easily write the answers for this. We will see phloem again in the next or the coming up questions. Like see, food transport. Food transport again in plants is done via which of these? Cambium, pith, phloem or xylem. So this is again the food transport pathway. We already saw the water and mineral transport pathway, right? So this is the food transport pathway. So which one of the following is responsible for the food pathway? The answer is phloem. Phloem is the one who is transporting the food from the stems to the roots and to everything, like from the mesophyll, starting from the mesophyll and then to the stem and to the roots and everywhere, right? So phloem is the one who is the transporter of food. Again, you need to remember and write down the entire pathway of the food in plants, similarly as the water and minerals. Moving ahead, the organ responsible for filtering the nitrogenous wastes in human. Which organ is responsible for filtering the nitrogenous wastes in human beings, if you may know? So we have heart. Is heart a filtering organ? Obviously not. Sir, heart is not a filtering organ. It is not the one. Liver, lungs, kidney. These three are the filtering organs. These three are filtering organs. Now they have said nitrogenous waste. They have said nitrogenous waste. So liver does not do that. Lungs does not do that. Lungs purifies air. So it is carbon dioxide kind of waste. So not nitrogenous waste. So lung purifies air, and liver, no, not. Then all the nitrogenous wastes are in the urinary tract. So this will be the kidney. The kidney will be the right answer, because we have seen the all the urea related stuff, which is the nitrogen derivatives. All these are nitrogenous derivatives. So all those are found in the urinary tract, in the urine, and that's why kidney is the one who is the filter of the urine. So the organ in the human body that filters all the nitrogenous waste will be kidney, and none other the option, no other option, right? Moving ahead,
we have which structure is functional, is the functional filtration unit of the kidney. We just saw the kidney. Now which of that, which part or which structure in that kidney is the most the functional unit or the basic unit of the kidney? Like we know cell is the basic unit of human life or the living world. So that's how nephron, yeah, nephron is the correct answer. Nephron means, one nephron means the kidney cell, okay, the unit of kidney. This is the kidney cell, okay, this is nothing but kidney cell, that is nephron. Neuron is nervous cell, we all know. Glomerulus is a part of the nephron. Tubule is again the part of a nephron, it's a tubule, convoluted tubule are there. So neuron is in the nervous system, so nephron will be the answer because it is the functional unit, okay, of kidney. Moving ahead, name the carbohydrate stored in the human liver. So this is again a carbohydrate derivative, okay, carbohydrate derivative. So not directly carbohydrate. What do you mean by derivative? Derivative means a different form of carbohydrate, not directly carbohydrate, a different type of carbohydrate in a different structure or form that is stored in the human body, in the human liver, in that sense, in the human liver more specifically. So this is the place where carbohydrate is stored. Which one will be the answer? Anyone? Anyone? The correct answer will be nothing but glycogen. The correct answer will be glycogen because glucose is digested in the human body, it is not stored. Cellulose is again a carbohydrate derivative, but it is a structural unit in plants, and again starch is stored as a carbohydrate derivative but in plants. So glycogen is stored as carbohydrate derivative in animals, and starch is stored in plants, okay. Starch is stored in plants and carbohydrate is stored in animals. Got it? Got it? Moving ahead, we have which enzyme initiates starch digestion in the mouth. So there must be an initiation, right? There must be an initiation of the digestion process. So in the entire alimentary canal that starts in the mouth like this, and then it goes down the esophagus, and then it goes down in the stomach, and then in the intestines, right? Like this. Like this. So digestion starts here in the mouth, right? This is the alimentary canal. Right? So here we have the digestion beginning here. Digestion of what? Digestion of starch. Digestion of starch. So something in the mouth might be the answer. Some enzyme that should be present in the mouth, that initiates this digestion, in the mouth itself. And so which enzyme does that? Digestion of starch. The answer is amylase. We have salivary amylase, right? So salivary amylase is the answer. Trypsin again comes from the in the intestines, which is a protein digestion one. Fat digestion. Emulsification of fat is done by those trypsin and lipases. And we have pepsin, which is again a protein digester, and maltase is a carbohydrate digester, right? So we all know those. So but the amylase is one which is used for carbohydrate, but in the starch form. Maltase is again found in the ruminants as well, like cows and everyone, which are the ruminants. Maltase enzyme is also found in them, right? But now we have amylase because the answer is the initiation is done in the mouth. So that is done by amylase.
right? Moving ahead, the movement of food in the food pipe. In the previous slide itself, I showed you the entire alimentary canal, right? The entire alimentary canal. Now you have to say that the movement that takes place, there should be a muscle movement, right? How the food will go down the alimentary canal, the food pipe basically, right? This is also called the esophagus. The food pipe is called the esophagus, right? So esophagus, through the esophagus, what is the type of movement or the movement of the food element down the esophagus? Down the esophagus, like this, down the esophagus, food pipe. This movement is called what? This movement down the food pipe is called what? The answer is peristalsis. See, translocation is the transport of food in plants. This is the transport of fluid in plants, right? That is called translocation. Peristalsis is the movement of the contraction and relaxation of the food pipe by which the food goes down our alimentary canal. The food goes down our alimentary canal, and that is known as what? Peristalsis. And the movement is known as peristaltic movement. Peristaltic movement. So this is the movement that is taking place here. That means peristaltic, the word peristalsis or peristaltic means there is two sides, two membranes, and altered contraction is taking place. Once this side is contracted, then this side is contracted. So peristalsis, peri means two membranes, and two membranes are contracting in alterations, and that's how the food is going down. The food is going down because altered contraction and relaxation. Altered contraction and relaxation of membrane or pipe, which is the food pipe here. So that's how, due to the altered contraction and relaxation of the membrane, the food goes down one after the another, like the steps, like this. The food will go down in a zigzag motion. That is known as peristaltic movement. Moving ahead, we have the process by which plants lose water, excess water is known as which of the following? Respiration, transpiration, excretion, or translocation. Excess water is the term here, and the answer would be transpiration. Now see, excess water is, we also lose some of the water by our sweat. So in our hands we see the hands are sweaty or anything like that. So that is also a losing of water, but that is also a control of the temperature, right? We maintain our body temperature by sweating. When we sweat, the water comes out on the surface of the skin, and that gets evaporated by the atmospheric heat, and due to that evaporation, the water takes away the temperature from the surface itself. This is the concept of latent heat, right? So during that evaporation process, latent heat is carried out from our skin by the saliva, by the sweat, right? That is known as perspiration. Now this is transpiration. So perspiration means sweating or losing of excess water by the process of sweating. That is perspiration. That is in humans. And in plants we have transpiration. In plants we have transpiration. Respiration is breathing. Excretion is also a process. Translocation is transport of food by what? By phloem. By phloem. Okay. So the answer will be transpiration. Moving ahead, we have the ultimate product of aerobic respiration is Aerobic means, what do you mean by aerobic? Aerobic means presence of
O2 or oxygen, presence of oxygen. So the respiration that takes place in the presence of oxygen is known as aerobic respiration. In aerobic respiration, which is the ultimate product we can get? In aerobic respiration, which is the ultimate product that we get? Obviously the answer will be O2 and H2O. O2 and H2O. Alcohol is not a product of aerobic respiration, because we know alcohol is fermented and fermentation is an anaerobic process. Alcohol is basically fermented. We always hear fermentation or the alcohol production, everything. So fermented product is an alcohol and fermentation is an anaerobic process, which means it takes place without the presence of oxygen, right? Now lactic acid we have, that we will be studying later. We already studied it, that we will be solving later. So this is the ultimate product of aerobic respiration. Oxygen, in the presence of oxygen, carbon dioxide and water is evolved or ejected. Okay. Moving ahead, anaerobic respiration. We just saw aerobic. So the anaerobic respiration, anaerobic means absence of oxygen. Okay. Absence of oxygen. So in absence of oxygen in muscle cells, which one is produced out of all of these? Now we have already seen this is a product of aerobic respiration, right? This is a product of aerobic respiration. We have ethanol, we have lactic acid, we have oxygen. Obviously the answer will be lactic acid, because in aerobic respiration as well we have seen that carbon dioxide and H2 is formed, but in muscle cells when there is a lack of oxygen, absence or lactic acid, absence of oxygen, lack of oxygen, we see the production of lactic acid, and this makes our muscles cramping. The muscles cramp that we see after rigorous exercise is due to lactic acid production as a result of anaerobic respiration. See, while we exercise a lot or we play a lot, in our muscle cells they do too much work, so they need more oxygen, to be honest. So but we are breathing less, so the oxygen, the amount of oxygen that is needed does not get fulfilled. Okay, so that's how they start respiring anaerobically in the presence of less oxygen, and in that scenario, that case, lactic acid is formed, and lactic acid accumulation in the muscles lead to muscle cramp and the muscle pain basically. Okay, so remember, during anaerobic respiration the end product will be lactic acid that is forming and getting accumulated in the muscle cells, and these lead to muscle cramps or pain. Okay, got it? Muscle cramps. Okay, moving ahead, we have the component that carries oxygen in blood. That should be in humans. Okay, blood is in human here, because we have studied plants and animals, right? So the component that carries the oxygen in blood will be what? Will be obviously the red blood cells. Why? Because they are red, because they have a red colored pigment which is hemoglobin, right? Hemoglobin, Hb. So this hemoglobin is the pigment which is the red pigment, and that carries the oxygen by they bind oxygen, right? So that's how RBC can carry the oxygen in human blood, in human body. So the red pigment is nothing but hemoglobin, and that binds oxygen, and that's how RBCs carry the oxygen in the human blood or body, right? बेसिक है, सबको पता है, we all know this. आगे बढ़ते हैं.
आगे बढ़ के हम देखेंगे कि कैसे टिश्यू में, फ्लावरिंग प्लांट के टिश्यू में भी कैसे फूड जाता है। तो भाई बेसिक जो पॉइंट है, द पॉइंट, बेसिक पॉइंट हियर इज दैट food will be carried by phloem and water and minerals will be carried by xylem in all plants, flowering plants, non-flowering plants, vegetative plants, every plant. Phloem is the one which carries food. So the mnemonic would be, think of food as this spelling, food, right? Food. So food carried by phloem. Pha is common here. So food is carried by phloem and waters and minerals are carried by xylem. Very simple, very simple. So here also the which tissue transport food is nothing but phloem. Got it? Easy, easy, very easy, easy. Moving ahead, let's go ahead and let's see क्या मिलता है हमको। आगे बढ़ के हमको मिलेगा कि exchange of gases in plants. We have seen alveoli is the part where exchange of gases take place in human being. So in plants the exchange of gases takes place through what? Roots? No, exchange of they take up water absorption. They take up water absorption. Stomata, obviously. Stomata is nothing but the kidney bean shaped cells, right? These are present in they are kidney bean shaped, right? This is stomatal pore, opening, right? And this pore opens and closes time to time to, why? This gets swelled up, swell to close this, and this closes to avoid water loss in desert plants. We already saw the excess water comes out through stomata by the process of what? By the process of transpiration, right? By the process of transpiration, the water get lost. But we in desert plants or in plants during very harsh weather conditions, like in drought situations, we won't want excess water or water to leave the plant. So in that cases, due to evaporation, the exchange of gas takes place by evaporation in plants, okay, and that is what is called as the transpiration, right? So there we saw water gets also lost from the plants. So in that scenario we will see that stomata gets closed. So stomatal pore or the stomatal opening is the one which is kidney bean shaped and is responsible for gaseous exchange in plants. Okay, understood? Very easy. बच्चों का है ये तो बहुत ही आसान है. आगे बढ़ते हैं. Why do aquatic organisms breathe faster? So the breathing rate is greater in fishes or aquatic animals from the terrestrial one, which is the land animals. Why? More CO2. पानी में क्या ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या पानी में लेस ऑक्सीजन है? क्या ज्यादा ऑक्सीजन है पानी में? क्या लेस कार्बन डाइऑक्साइड है? ये बेसिक सा सवाल है. तो इसका सिंपल सा जवाब यही होगा कि पानी में कम ऑक्सीजन है. क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इन वाटर इज प्रेजेंट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म in water, like H2O. In H2O we have oxygen, right? But in dissolved form. In air we have, terrestrial we have O2 in air, naturally in air form, not dissolved form. We can also see in the ozone layer, which is O3, we have nascent oxygen, means O like this, which is 3 different oxygen molecule, which is nascent oxygen. Nascent means naked also, naked. Okay,
So nascent oxygen again we can see in the atmosphere. We can find these in atmosphere. So the O3 here in ozone is nascent oxygen, and O2 in the atmosphere, where we can already see that we breathe oxygen, right? Right. But in water we will see dissolved oxygen. That's how from the terrestrial organisms जो पानी में रहते हैं उनके पास ऑक्सीजन ही कम है, उनके पास एक ऑक्सीजन बहुत रेयरली मिल रहा है क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, गैसियस फॉर्म में नहीं है, इसलिए ज्यादा ब्रीथ करना पड़ रहा है. मतलब हमारा एक ब्रीथ उनको 4 बार ब्रीथ करने पे इक्वल ऑक्सीजन मिलेगा, ऐसा है रिलेशन. तो इसका मतलब क्या है, पानी में कम ऑक्सीजन है क्योंकि वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में है. इसीलिए एक्वाटिक एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म जैसे कि मछलियां, दे विल हैव टू ब्रीथ फास्टर, दे विल हैव टू ब्रीथ फास्टर. ओके, moving ahead, which function is not directly a part of the process of excretion? So excretion matlab what? Excretion matlab removal of wastes, basically कुछ भी waste हो उसका removal ही तो है excretion. कुछ भी waste है body में उनका removal का मतलब ही तो excretion है. तो which function is not directly involved in the process of excretion? Removal of urea? नहीं, ये तो किडनी में होता ही है, किडनी में तो ये होता ही है, तो ये तो अब प्रोसेस है, ये आंसर नहीं है. फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, अरे ये भी तो इंटर रिलेटेड ही है, यूरिन भी तो किडनी से ही आ रहा है हमारा, ये तो एक्सक्रीटरी प्रोसेस का ही पार्ट है. कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल वाया लंग्स, अरे हाँ ये भी तो एक्सक्रीशन के पार्ट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक वेस्ट है, तो ये भी एक एक्सक्रीशन ही हुआ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है. ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स ही तो हैं, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है. लेकिन प्रोटीन डाइजेशन, भाई नाम में ही डाइजेशन है तो ये तो एक्सक्रीशन नहीं होगा, ये तो एक डाइजेस्टिव प्रोसेस है, ये एक डाइजेस्टिव प्रोसेस है, नॉट एक्सक्रीटरी प्रोसेस. So obviously digestion of protein is not a function. And again directly they said, directly maybe they are breaking down, digestion means they are breaking down bigger protein or complex proteins into simpler form, जो कि पेप्सिन करते हैं, जो कि काइमोपेप्सिन, ट्रिप्सिन ये सब करते हैं. लेकिन वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ईजियर या सिंपलर फॉर्म्स में, छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो वो डायरेक्टली एक एक्सक्रीशन का पार्ट नहीं है, वो डाइजेशन का पार्ट है. आ गया समझ में, इजी पीजी, वेरी इजी. मूविंग अहेड वी हैव कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. दिस इज altered. Okay, we already saw it in the previous question number 3, 4 or something. So the alimentary canal, or what do you call the alimentary canal as? Alimentary canal is called the food pipe. So देख रहे हो कैसे questions को words को change करके भी देते हैं. ये इसी का नाम था peristalsis, the movement of the food, the movement of food down the food pipe. So this is nothing but this is peristalsis. But again peristalsis means the altered contraction and expansion of the walls of the alimentary canal or the esophagus or the food pipe. Got it? तो उसका नाम ही पेरिस्टालसिस है. तो पेरिस्टालसिस से अगर क्वेश्चन आता है तो वो कैसे आएगा, एक हो गया वही है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन और एक्सपेंशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, एंड वही है द मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द फूड पाइप. तो जैसे खाना खाते हो गले से वो नीचे जाता है ना, हलक से, तो वो नीचे जाना जो मूवमेंट होता है उसी को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं. ठीक है, जैसे स्नेक मूव करता है, जब कोई स्नेक मूवी में या नेट जियो में तुमने देखा होगा कि when the snake engulfs a thing, because snakes don't chew, they swallow. So when a snake is swallowing a food, it goes down their body. So that is also a peristaltic movement. Okay, that is also a peristaltic movement which is altered contraction and expansion, and that's how the food goes down. Okay, emulsification, this is an important term.
keep this in mind. Emulsification is breaking down, okay, breaking down of fats, okay, from large to small units or bubbles. So emulsification of fat, I just said this one or told this line to you when we were discussing lipase. So lipase does this emulsification of fat, which means breaking down of large fat globules into smaller fat globules. This is called emulsification of fat. So emulsification is not it, diffusion is the transport across membrane, translocation is the movement of food in plants. So peristalsis is the obvious answer. Moving ahead, आगे बढ़ते हैं. Why is the left ventricle wall of the heart is thicker? So we all know that in the heart, in the human heart, if we see, this is the chamber like this, okay, this is a membrane, this is another membrane like this, and then we have the ventricles like this, okay, the ventricles like this, So here we have the ventricles, and this is the, so this one is the right atrium, this is the right ventricle, this is the left atrium, this is the left ventricle. They are saying these walls are the thickest, okay. Why are they thickest? Why? Because they pump the blood. The walls are directly, the thickness is directly related to pumping. So more thick, अगर जितना ज़्यादा thick होगा उतना तगड़ा होगा, उतना ज़्यादा पंप कर पाएगा दूर देशों तक. जैसे अगर तुम एक गन लेते हो तो छोटा पिस्तौल होगा तो वो तो छोटे रेंज के लिए होगा, लेकिन जो स्नाइपर होते हैं वो बहुत दूर तक शूट कर सकते हैं, राइट. हाई प्रेशर, kind of true, it is the correct answer itself, high pressure, but the correct answer is high force. They can pump the blood with more force, okay. So that's how when they are thick, they are pumping the blood with more strength, right. So more rigid they are, and that's how the left ventricle, they pump the blood to the entire body through the what is the artery called? It is called the aorta. So through the aorta they are pumping the blood to the entire body, so they need most power or force to exert in the blood, so that जैसे ही वो सबसे जोर से पंप करेगा वो ब्लड पूरे बॉडी तक जाएगा from head to toe, right, through the aorta, the main mother artery, right, in the systemic cycle. And right ventricle, they just pump the blood through pulmonary artery to the lungs. So they have a small distance to cover from the heart to the lungs. They are in the same proximity in the rib cage itself, right. So that's how they don't need so much of pressure or thickness, but both the ventricular walls are thicker in comparison to atrium's wall, because atriums are just the other chamber. They just need to pump the blood to the next chamber. So they do not need that much of thickness or power or force to exert in the blood, right. So the correct answer is pump blood to the entire body. This one is done by the what? Right ventricle, okay, pumps to the lungs and pumps to the liver. No, this is blood doesn't get pumped to the liver like that. From here they pump to the entire body, okay. And this is also, this receival of blood from the lungs is done in the left atrium by the pulmonary vein, pulmonary vein, okay, and this is done by pulmonary artery, okay. Easy peasy, very easy things. So we all understood the entire concept here. So these walls are already thicker, okay, but most thick, this is the thickest, most thick, most
distance covered. So remember, the thickness is directly proportional to pumping distance. Pumping distance. So more distance, more thick. More distance will be equal to more thick walls. Got it? Easy. Moving ahead. Moving ahead, we have which nutrient is absorbed into the blood primarily in the small intestine. Primarily in the small intestine. So they are asking which of the nutrients is getting absorbed into blood. Like from the intestine, they are again, thank you, from the intestine, they are again getting absorbed back, okay, in the bloods to get back to the circulatory system. So which of the nutrient is absorbed back from the small intestine? Water, that is not a nutrient. Glucose, urea, oxygen. See, here obviously we are discussing the small intestine. So in the small intestine we will have nutrient that is entered by the food, from food. We might say urea, but in the intestines we don't find urea like that. They are carried to the urinary system in the kidneys. So in the intestines urea will not be the answer. Nitrogenous waste go directly into the kidney. So in the small intestine we won't find urea. Oxygen again is in the respiratory system. So that is not again absorbed back from the small intestine. They are there in the cells, but that is done in the circulatory system, not in the digestive system, right? So water and glucose are the two major options here. But since water is not a nutrient, and also if we consider the mineral statistics of water, we will still find glucose getting absorbed back in the small intestine to the blood. Like that's why we see the blood sugar level contrast, or the problems we see that we have blood sugar level, BP, or the diabetes as a disease. What is that? That is the excess glucose. When glucose is absorbed back in the blood, so that increases the blood sugar level. So when this is done in excess, because why? Because glucose couldn't be broken down by what? By insulin, right? So insulin is the one that maintains the blood sugar level, and glucose get absorbed back into the blood from the small intestines, right? Because they have villi and microvilli and a lot of capillaries, and that's how they get absorbed back. So a lot of water is absorbed back from the large intestine, and glucose is absorbed back in the blood by from the small intestine. So water is done in the large intestine and glucose is absorbed back in the small intestine. Easy, very easy. We are almost in the end of the question session, right? Now we will see which energy, what is the, this is a basic question. ATP is the answer. Obviously we all know these facts, because energy currency is asked. Which is the powerhouse of the cell? Mitochondria. How ATP is produced? ATP is nothing but adenosine triphosphate. That is the energy currency of the cell. And RNA, DNA, these are again different. RNA are in the part of protein synthesis, and DNA are the genetic materials and all. And NADP, this is again you will be finding in Krebs cycle and other cycles in plants. So energy currency of the cell will always be ATP, because ATP is used for any active process. Why? Because for any active process, okay, what do you mean by active process? Energy consuming process, energy consuming, not a passive process. So any energy consuming process is active process, and in every active process ATP is used or utilized. ATP is utilized, and for this reason we call it the energy currency of the cell, because in every active process ATP रहेगा. ATP खर्च हो जाता है in every active process. खर्चा तो होगा ही, ठीक है? समझ में आ गया सबको? So ATP, क्योंकि ATP सारे एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी कंजम्पशन में यूज होता है,
उसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ओके, इजी इजी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। So what is removed from the body of plants basically, excretory product के थ्रू को क्या चीज प्लांट के बॉडी से निकल जाता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है वेस्ट प्लांट्स के लिए, so this is not an answer. O2 is also not removed from the body by excretory products. The answer will be the waste in leaves. लीव्स में जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट्स या वेस्ट बन जाते हैं विच इज टॉक्सिक फॉर द प्लांट, विच इज हार्मफुल फॉर द प्लांट, सो दोज वेस्ट, क्योंकि किचन है, किचन में तो वेस्ट होता ही है, बनता ही है ना बाई प्रोडक्ट, तो वो डस्टबिन जो तुम्हारे घर में भी जो किचन होता है उधर से फेंकना पड़ता है, वैसे ही लीव्स में जो भी वेस्ट जम जाते हैं या होते हैं उनको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द प्लांट्स बाय एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स थ्रू, ये और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के थ्रू रिमूव हो जाता है। वो होता है कैसे, ट्रांसपीरेशन में होता है, फिर बहुत कुछ विल्टिंग देखने को तो स्प्रिंग में मिलता है, उसके सिवा भी हम देखते हैं वो जैसे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो देखना कि प्लांट के ब्रीक्स में भी बार्क में भी ऐसे प्रोट्रूड्स होते हैं ऐसे, ये कुछ नहीं है, ये वेस्ट्स हैं, ये वेस्ट डेब्रिस हैं, ये ऐसे एक्स्ट्रा बाहर निकल के रहते हैं। ये ब्रांच हो गया प्लांट का, बड़े प्लांट मतलब ट्री बोल रहा हूं मैं, तो ऐसे जो होते हैं ना प्रोट्रूडिंग, तो उसको हम वेस्ट समझ लेते हैं। वही है एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम लीव्स, बट वो बाहर भी चले जाते हैं थ्रू ट्रांसपीरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन तक हम आ गए हैं। फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स इन प्लांट्स इज टू ट्रांसपोर्ट फूड, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा, एब्जॉर्ब वाटर और स्टोर स्टार्च। The correct answer will obviously be open and closed stomata. We saw those kidney bean shaped, right, cells like this. So here we have the guard cells. These are the guard cells. As I said, to convert or to avoid the loss of excess water, so these guard cells close the stomata, the pore, the stomatal opening, the opening to avoid the loss of excess water. Okay, that is why they are guard cells. They also prohibit external foreign elements or harmful stuff to get in through stomata, or they also help in losing of excess water from stomata, right? तो ये था 25 क्वेश्चंस। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो हाई वेटेज पोर्शन में क्लास 10th के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाया गया है, मैंने बनाया है, तुम देख सकते हो इसी चैनल में। You just go visit in the channel and you can see high weightage topics for score exam in biology. So you will find that in this channel itself. So इधर क्या पढ़ने को मिलेगा तुमको, टॉपिक एंड सब टॉपिक एंड क्यों इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक्स में यही आते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये क्या है, ये लाइफ प्रोसेसेस का ही पहला पार्ट है। ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस आ गया, तो इसमें ये सब तुम्हें देखना है, तुम्हें स्कोर में अच्छा करने के लिए। इक्वेशन क्या है इसका, साइट क्या है, फैक्टर्स क्या है, स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथवेज, तो सभी पाथवेज देखो, ये है माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंजाइम, ये सब पाथवे तुम्हें देखना है। तुम अगर डेप्थ में जाना चाहते हो तो स्टमक का भी जो पोर्शंस हैं, जो अपर स्टमक है, लोअर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी जो पोर्शंस हैं, जो कि है वो ज्यूजेनम, वो सब, ठीक है, ये सब भी तुम जान सकते हो। तो ये सब पोर्शंस जो हैं वो स्टमक का भी एक डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, राइट, तो सब देख सकते हो। ऊपर से हमें देखने को मिलेगा कि ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंसेस हैं, एक पैरासाइटिक हो गया, एक हो गया इधर ऑटोट्रॉपिक में जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक में जो नहीं कर पाते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। इनके डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, स्टेप्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमने देखा पेरिस्टाल्सिस के डेफिनेशन से ही 2 क्वेश्चन आ गए, समझ रहे हो, वैसे ही स्टेप्स पूछे जाते हैं कि कहाँ से ये फ्लो कर रहा है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमने पिछले सेशन में देखा था कि पाथवेज से भी क्वेश्चन आए थे, राइट। सो वो लीव गट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि एक लेबल कर दिया, उसको पूछा कि इस लेबल का मार्किंग क्या है बताओ, वैसे क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यू ही तो आएगा, कंपेयर भी आ सकता है, मोड्स एंड एग्जांपल्स ऑफ दीज, ठीक है।
उसके बाद हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन के पार्ट में। उसमें से तुम्हारे पास आ जाता है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। इससे हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन अभी देख लिए। एरोबिक एंड एनारोबिक से हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन अभी देख लिए, ठीक है। लैक्टिक एसिड वाला भी देख लिया, ठीक है। केमिकल इक्वेशन से भी आते हैं, क्या है अपना बाई प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, तो ये भी आ सकते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ऑर्गन्स भी देख लिए। पाथवे, अगेन आई एम सेइंग दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पाथवे देखना ही है तुम्हें सब चीजों का, ठीक है। ऊपर से एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर, फंक्शन हमने देख लिया, सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा था। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हमने स्टोमेटल वाला देख लिया, लेंटिसल एक्सचेंज भी है। ये सब कवर करना है ताकि तुम्हें एग्जाम में अच्छा कर पाओ तुम, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन में क्या हो रहा है, ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, एयर इन एंड आउट हो रहा है, इसमें इक्वेशन है, ये सब देखना है तुमको। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज नथिंग बट अगेन दी पाथवे और दी फ्लो चार्ट, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन और हॉट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि मैंने तुमको समझा दिया था मसल क्रैम्प का, तो वैसे ही लैक्टिक एसिड वाला क्वेश्चन पूछ के तुम्हें बोल देंगे कि ये मसल क्रैम्प क्यों हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, गेटिंग मी। सो उसमें एक एक्सरसाइज कर रहा है कोई, यूसेन बोल्ट बहुत तेज भागा, फिर उसके क्रैम्प्स आ गए, क्यों? तो तब तुम्हें सोचना है कि क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रहा था, उसके पास ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन टुक प्लेस, एंड ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन we find what muscle cramps due to lactic acid formation and accumulation in the muscles. Got it? respiration in plants देख लिया हमने, बात कर लिया इसके बारे में। तो डायग्राम्स एंड लेवलिंग फिर आते हैं, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो हमने दूसरे सेशन में देखा है, तुम जाके देख सकते हो। पूरा बायोलॉजी का वेटेज वाला पार्ट हमने उसमें यही है कवर कर लिया था। नेक्स्ट वी सी ट्रांसपोर्टेशन। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी है, हार्ट का स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर, आर्टरी, वेन कहाँ है, डबल सर्कुलेशन क्या है, हमने पिछले सेशन में पूरा देखा है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जाइलम, फ्लोएम, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, इस सब में से सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन हमने आज कर लिया है। जाइलम से क्वेश्चन कर लिया है, फ्लोएम से कर लिया है, ट्रांसपिरेशन से कर लिया है, ट्रांसलोकेशन से कर लिया है, फ्लोएम का ही फूड का प्रोसेस है वो है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से भी क्वेश्चन कर लिया है हमने। थिकनेस ऑफ दी, कोई इंफॉर्मेशन हम रिमेंबर नहीं करते, दिस इज सिंपल, दिस इज बट यू जस्ट रीड इट वंस एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच पार्ट ऑफ इट। ये ऐसे ही मक्खन मत लगाओ, बस सुनो तुम ध्यान से, ठीक है। तो ब्लड वेसल जो होते हैं उसमें आर्टरी एंड वेन्स, इनके स्ट्रक्चर ये सब आते हैं। डबल सर्कुलेशन में हमने पल्मोनिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन देखा है, हमने ऑलरेडी पढ़ाते वक्त, मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो बोल दिया था कि कैसे पल्मोनिक सर्कुलेशन में हमने देखा है कि वो पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन हो रहा है हार्ट से लंग्स तक, एंड फिर बॉडी तक जाने के लिए हम आयोटा और वीना कवा देख रहे हैं, वो है सिस्टेमिक। सो वो डबल सर्कुलेशन हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। तो इसमें सब तुम्हें कवर कर लेना है, ऊपर से भी देख लोगे तो एग्जाम में ऑप्शन देख के तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। फंक्शन ऑफ ब्लड हमने थोड़ा बहुत देख लिया है, कंपोनेंट्स देख लिया है, हेमोग्लोबिन है पिगमेंट जो कि ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ये भी एक क्वेश्चन था अभी हमने किया है। तो एक क्वेश्चन हमने पिछले दिन देखा था प्लाज्मा रिलेटेड, जिसमें था कि प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन होता है कि नहीं होता। उसका आंसर ये था कि अर्थवर्म के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन होता है, लेकिन तुम्हारे क्लास के हिसाब से क्लास 10th में वो नहीं है, इसलिए प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आरबीसी रप्चर कर जाता है। आरबीसी जो बाइकॉन्केव शेप्ड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो उन पे होते हैं हेमोग्लोबिन पिगमेंट। अगर वो बर्स्ट करते हैं या रप्चर करते हैं तब प्लाज्मा में कुछ हेमोग्लोबिन फैल जाते हैं। ये अनदर टिप है, ठीक है। इसमें पाथवे देखा है हमने, सारे पाथवेज कवर करने हैं, वैसे ही हार्ट का, लीफ का, वस्कुलर डायग्राम भी देख लेना है तुमको। इसमें भी डबल सर्कुलेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्सक्रीशन भी हमने कवर कर लिया, इसमें हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा है, किडनी पे क्वेश्चन था, नेफ्रॉन पे क्वेश्चन था, उसका स्ट्रक्चर पे भी थोड़ा बहुत हमने पिछले सेक्शन में देखा है, हालांकि इसमें डायरेक्ट स्ट्रक्चर से नहीं था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी एक क्वेश्चन था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ क्या हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन से भी एक क्वेश्चन था कि ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब्ड हो रहा है कहाँ पे, तो हमने वो सब देखा है। मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है, देखो यूरिया, यूरिक एसिड, ये क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, इसके भी हमने क्वेश्चन किया है, यूरिन वही है, ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में मेथड्स में हमने देख लिया है। देखो मैंने बोला था कि रेजिन, गम्स, एक्सक्रीशन ये सब होता है, तो ये जो भी है ये रेजिन्स, गम्स जो है मैंने अभी दिखाया था उसमें कि प्लांट के कैसे ब्रिक में वो जम रहे हैं, वो और कुछ नहीं बट प्लांट के वेस्ट ही हैं। तो वैसे ही एक्सक्रीशन बाय लीफ होता है, लीफ फॉल। ये लीफ फॉल जो है इसे हम कहते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स।
तो ये लिव फॉल हाई ओई जो ये सब मत लिखो, क्वेश्चन है तो वो पूछो ये क्या लिख रहे हो, तो वो भी जो भी है। तो ये लिव फॉल जो है स्टोमाटा के थ्रू, रेंटिसल्स के थ्रू कैसे ट्रांसपिरेशन या रिमूवल ऑफ वेस्ट हो रहा है, हमने ये भी देखा है, तो ये तुम्हें पढ़ना ही है, ठीक है। इसमें डायग्राम भी आते हैं, डायग्राम जैसे स्टोमाटा का डायग्राम देके बोल देगा गार्ड सेल क्या है, ये सेल क्या है, वो सेल क्या है, ऐसा पूछ सकते हैं ये लोग, ठीक है। नेफ्रॉन का भी लेवलिंग देख लेना पूरा प्रॉपर, कहाँ ग्लोमेरुलस है, क्योंकि पिछले दिन हमने देखा था एक क्वेश्चन था जो कि पूरा जो वेटेज वाला सेशन है उसमें मैंने कवर किया था एक चीज की नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में भी ग्लोमेरुलस, बोमेंस, कैप्सूल ये सब के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। कंपेयर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये करना नहीं है बट ये हो सकता है कि पूछ ले कि ये प्लांट का ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या उधर भी वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो थोड़ा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है, ये भी हमने देखा है कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है किडनी से बाहर तक, यूरेटर्स फिर यूरिथ्रा तक, तो ये भी पूरा प्रोसेस पाथवे के थ्रू तुम्हें पढ़ना है, रिमेंबर करना है। एमसीक्यू ऑन वेस्ट प्रोडक्शन तो आ ही सकते हैं। तो यही था कुछ ओवरऑल 5 किडनी डायग्राम एंड पाथवे, ये भी तुम्हें देख लेना है। ये जो हैं इनके सारे मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये सारे पाथवेज इंपॉर्टेंट हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हार्ट का फ्लो चार्ट हो गया, नेफ्रॉन का हो गया, और फिर स्टोमाटा का हो गया, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स एंड प्लांट प्रोसेसेस, इनके लेबलिंग भी आ सकते हैं, आइडेंटिफाई करने बोलेंगे और उनका फंक्शन बताने बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, तो ये ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ऊपर से हमारे पास रीजनिंग एंड कॉन्फिडेंस में कंपैरिजन में डिफरेंस आ सकता है, ये सब एडवांटेजेस और 4 चेम्बर्ड हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये एडवांटेज क्यों है, क्योंकि इसमें नो मिक्स ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम तो वार्म ब्लडेड है ना, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारे पास ये मिक्सिंग नहीं होना है। इफ आवर ब्लड गेट मिक्स्ड such as oxygenated blood and deoxygenated blood, they get mixed up in our body, तो हम जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ना अपना, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पंछियों में एवीज, प्लांट्स मतलब ह्यूमन बींग्स मतलब मैमल्स, एंड जो कि पंछियां होती हैं उनमें ये चीज होते हैं, वो वार्म ब्लडेड होते हैं, और बाकियों में वो अफोर्ड कर सकते हैं। और क्योंकि हम लार्ज एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वी कैन नॉट কি বলবো we cannot afford, right, we cannot afford the mixing of oxygenated and deoxygenated blood, right, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो भी नो लॉन्गर इन हार्बीवोर्स, ये भी वाई, ये हॉट क्वेश्चन है, ये थोड़ा टिप्स हैं, ये तुम गूगल कर लेना कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों नहीं है हार्बीवोर्स में, एल्वियोली और नेफ्रॉन में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, बोथ आर द यूनिट्स, एंड दोनों में ही हम वो क्या देखते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा है, एकदम पतला है, थीन है मेम्ब्रेन, वैसा है। तो ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जस्टिफाई बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा तुम देख लेना, ये तुम्हारे ज्ञान के लिए है बस, नथिंग मोर, ठीक है। इसके आगे बढ़ने के बाद वी विल सी दैट दीज आर द डेट्स। तो ये है वेबसाइट तुम्हारे लिए, जाओ अभी और रजिस्टर कर लो, क्योंकि ये एग्जाम तुम्हारे लिए एक बहुत लकी एग्जाम हो सकता है, क्योंकि 28 सितंबर को और 12 अक्टूबर को तुम्हारा ये एग्जाम है अपने नियरेस्ट ऑफलाइन सेंटर पे, या ऑनलाइन भी दे सकते हो घर बैठे, तो ये दे सकते हो, देख लो, ऐसे रजिस्टर करना है इस वेबसाइट पे। इफ यू विजिट दिस वेबसाइट यू विल गो टू द स्कोर ऑफिशियल साइट, यू कैन फाइंड द एंटायर सिलेबस, you can find the entire exam pattern and everything according to your specific class। तो अगर आप 10th में हो तो जाओ रजिस्टर कर लो, क्योंकि आपके लिए ये एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता चलेगा आप प्रिपरेशन के रेस में कहाँ स्टैंड करते हो एक्चुअली, कि ये पूरा देश एक साथ कोई एग्जाम देगा, फिर आप दोगे ये 12th में पैन इंडिया एग्जाम, आपने अभी तक शायद नहीं दिया होगा, तो ये पहला एग्जाम होगा जहां आप फेस करोगे आपके ही जैसे और बच्चों को पूरे देश से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए ना ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, क्योंकि तुम देखोगे कि कैसे होते हैं ये एग्जाम, और पूरे देश जब कोई एग्जाम देता है उसमें कितना कठोर कंपटीशन होता है। जैसे नीट डायरेक्टली दोगे, जेईई डायरेक्टली दोगे, तो ये एग्जाम उससे पहले एक बार देके देख लो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले वो फेस ऑफ होना बहुत जरूरी है, तो इसको एक मॉक टेस्ट की तरह भी तुम देख सकते हो। और अगर तुम अच्छा कर पाए, क्योंकि वो कर पाओगे, जो मैंने बोला है वो अगर ऐसे तुम पढ़ लो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, तो तुम अच्छा मार्क्स ला ही लोगे। ये इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं,
तो तुम्हें बस ठीक ठाक मार्क्स लाना है एंड यू विल बी गेटिंग गुड स्कॉलरशिप। अगर बहुत अच्छा करते हो तो 100% मतलब फ्री का एजुकेशन मिलेगा श्री चैतन्य जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, और नासा भी तो जा ही सकते हो। ठीक है, तो लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और बहुत कुछ कर दो जितना जो कुछ कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और चैनल में जाके लाइव सेक्शन में तुम सर्च कर सकते हो अपने 10th रिगार्डिंग या कोई भी टॉपिक रिगार्डिंग, चैप्टर रिगार्डिंग, जैसे क्रॉप मैनेजमेंट एटसेट्रा, कुछ भी ऐसा रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो वो चैनल में सर्च करो, तुम्हारे पास प्रॉपर वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हें। हमने ऑलरेडी स्कोर पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और भी बनाने वाले हैं, तो वो देखते रहने के लिए प्लीज कमेंट कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से वो सबसे पहले तुम्हारे यूट्यूब के फीड तक पहुंच जाएगा और तुम देख पाओगे। ठीक है, तो यही था, फॉलो कर लेना हमको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, हर जगह पे, ताकि तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। ठीक है, यही है जो है अब तक। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टुगेदर अभी तक, एंड मेरे साथ बने रहने के लिए। ये सेशन अच्छा था, मज़ेदार था। पूरा सेशन में हमने देखा है कैसे क्वेश्चंस हैं इजी टू हार्ड, तो ये वन ऑफ दोज क्वेश्चंस हैं, और आगे और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सर सेशन बंद करना है यूट्यूब।